Thank you for giving me this opportunity to speak here today. Two speakers have already spoken at great length on different aspects of the issue that we are discussing today. I will not speak in great detail because already two-part video is available on this topic on YouTube. You can anytime listen to those two videos, which is available on. If you put Kumar JNU on YouTube, you will find it. He took my interview. I am grateful to him, wherein I have explained in great detail different aspects connected with this matter. So I will be speaking mainly, or perhaps I'll be highlighting only those aspects which were not covered in those two interviews. See, the idea of reservation receives very hostile response from the caste Hindus of this country, whether they are educated or non-educated. If I say that, I have done, MA, MPhil, PhD from JNU in political science, I can speak good English, they will not accept me. Reservation wala hai. See, I apply in general category also. See, if you go by the current debate of creamy layer, I can very well be classified as creamy layer because my father retired as Joint Secretary, Government of Bihar. My relatives are also in the USA. So you can say I am a creamy layer. So I apply for general category seat where I am shortlisted, I am called for interview. But after the interview is held, I try to find out whether I am selected or not because I am an expert on that area. So they will not take me. Why? Because it's a general seat, they will not take me. I am well known, not only in JNU but also outside. So they will say, had it been a reserve post, it would have gone to Umakant. So general seat पे आपका appointment नहीं होगा. Is it not discrimination? Despite having all the qualification and working experience from grassroots to the United Nations level. Is it not a discrimination to say that had it been a reserve post, it would have gone to Umakant? And now I will tell you what happens on the reserve post when I apply. I am not even shortlisted for interview. Can you believe this? I have co-edited a book about which was mentioned in the beginning itself with Sukhdev Thorat. I have other publications as well. But then they will, use a discretionary power and they will say, we invited only those who had teaching experience for interview. So it's, as I was telling to Abhishek ji and I've been sharing with others, it's not a selection process that they conduct. Especially for SC, ST, OBC, it is elimination process they conduct. It's a reality, ground reality in this country. Other speakers have been mentioning that how 78, 79, 80% posts are lying vacant. So the question that we should have been discussing today is not the issue of classification or reclassification. The problem doesn't lie there. The problem lies with the way it is being implemented in this country. There is no standard procedure which is followed everywhere. See, as part of the UDSF, when Professor Y.K. Alag was the Vice Chancellor of this university, we went as a delegation and told him that you have not implemented the reservation properly in admission. काफी देर तक हम लोगों ने उनको बताते रहे कि ये हमारे पास डिटेल है, आपने नहीं किया. Ultimately, with folded hand, he said, you bring us the candidate, we will give them admission. So we told him, sir, we are not candidate producing factory. UDSF is not a candidate producing factory. From where will you get the candidate?
Candidates are there. He said, how? I said, कट ऑफ को नीचे करो, कट ऑफ थोड़ा नीचे करिए, देखिए कितने कैंडिडेट ऊपर आते हैं. एक चीज वो करना है आपको. And the second thing that you must do is that those candidates who have scored very high marks in the reserve category, you have to transfer them into general category. You know, we got 30% reservation implemented in JNU for the first time. 30% reservation. All thanks to UDSF intervention. So that's why I'm saying, reservation as a policy, there is nothing wrong with it. Fault lies with the way it is being implemented. It's not that after that 30% reservation, every year 30% reservation is implemented. No. Even now, today, it is not being done in a proper way. You will find several violations. Not only in JNU, but at almost every institutions in this country. See, Abhishek ji talked about it, the Indira Sani case. Indira Sani versus Union of India, that is famous Mandal case. Why I am bringing in that again? That case was about the OBC reservation. It had nothing to do with scheduled caste. No. But as he mentioned, Abhishek ji mentioned, that because of the Indira Sani verdict, reservation in promotion for SC/ST was removed. How did this matter come up? Yeah? आप मंडल केस के ऊपर जजमेंट देना है आपको, SC/ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उस पर भी जजमेंट दे दिया. ये जो जातिवादी मानसिकता है ना, इतनी घिनौनी मानसिकता है कि वो 24 घंटा आपके पीछे पड़ा रहता है. ये रिजर्वेशन वाला पता नहीं कहां से चला है. अब वो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए इसको, कल को डायरेक्टर भी बनेगा, यहाँ पे चेयरपर्सन भी बनेगा, उसमें भी रिजर्वेशन चाहिए. तो वो 24 घंटा यही सोचते रहते हैं कैसे इसको रोकना है. अब उस तरह से इन द सेम वे ये क्रीमी लेयर का मामला, भाई कहां से आया क्रीमी लेयर का मामला? क्रीमी लेयर का मामला was not part of the Indira Sani case. Indira Sani, who has filed a case against Union of India against VP Singh government's decision to implement Mandal Commission recommendation. क्रीमी लेयर का तो मामला ही नहीं था उसमें. From where did it come? See, finally, Supreme Court agreed that we will implement reservation. लेकिन अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगाना है. तो पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा? 27% रिजर्वेशन होगा. आपने ये डिस्प्यूट नहीं किया, या आपके पास कोई ऐसा फ्रेश स्टडी नहीं है कि 52% रिजर्वेशन मतलब ओबीसी का पॉपुलेशन है कि नहीं है. अगर आप बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, रिजर्वेशन should be given to OBCs, we will give, but we will create terms and conditions. So first condition was that it will be only for 27% OBC reservation. You are not denying that OBCs do not belong to 52% of the country's population. You are not disputing that fact. But you are saying that no, we cannot allow more than 50% reservation. That's why there will be 27% reservation. ये पहला कंडीशन था. दूसरा कंडीशन क्रीमी लेयर आएगा. ये कहां से क्रीमी लेयर आया भाई? From where did it come from? There is no provision in the constitution for having economic criteria for reservation. No. See, बड़े चालाकी से, very cleverly they brought in this concept of creamy layer for OBCs. And they also said, we will not talk about SCs and STs. In the same judgment, Justice B.P. Jivan Reddy further talks about reservation is not against merit.
Justice Pandian also supported. Yes, reservation is not against merit. So on the one hand, you are saying reservation is not against merit. That's why you are allowing OBC reservation to be implemented. But in the next paragraph of that judgment, DP Jeevan Reddy said, in the super speciality courses, there will be no reservation. What is super speciality courses? Science and technology, medical science, defense, स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सब सुपर स्पेशलिटी कोर्स है, वहां रिजर्वेशन नहीं मिलेगा. अरे व्हाई आर यू कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ? भाई उससे पहले के पैराग्राफ में आपने कहा रिजर्वेशन इज नॉट अगेंस्ट मेरिट. तो आपने जो एक नोशन फैलाया गया है कि रिजर्वेशन मेरिट के खिलाफ होता है, तो आपने उसको बोला कि नहीं, रिजर्वेशन का मेरिट से कोई लेना देना नहीं. बट फिर आप बोल रहे हो कि सुपर स्पेशलिटी कोर्स में नहीं रहे. जो SC ST के प्रमोशन को लेकर के जो उन्होंने जजमेंट दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था उनको, क्योंकि वो कंसिडरेशन के लिए था भी नहीं. अब उसके नतीजा क्या हुआ? और ये सुपर स्पेशलिटी कोर्स वाले का नतीजा क्या हुआ, उसका मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ. पहले वाले का नतीजा ये हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 95 के पहले, इस जजमेंट के आने के बाद इमीडिएटली बाद एक ऑफिशियल मेमोरेंडम निकाल दिया और बोला कि SC ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म. इमीडिएटली, विदाउट इवन कंसल्टिंग विद द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, DOPT ने वो ऑफिशियल मेमोरेंडम निकाल दिया. अब उसको लेकर के सारे SC ST पार्लियामेंटेरियन इकट्ठा हुए. फिर उसके बाद अभिषेक जी ने भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया 95 में उसको रेस्टोर करने के लिए. सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज बोलेगी और आप देखिएगा जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाती है. जैसे मेरिट वाला बात है, बोला सुपर स्पेशलिटी कोर्स में नहीं हो, इमीडिएटली तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला हमको. बट सन 2000 की बात है, इन द ईयर 2000 when I was in the final year of my PhD here, me and my colleagues who were there in UDSF, we came to know that UGC had sent a confidential letter to all the central universities that from next academic calendar, next academic semester, there will be no reservation for SC ST in MPhil and PhD. Why? Because MPhil and PhD is also part of super speciality course. And we were completely shocked. We said nothing doing, we'll put our PhD into dustbin, but we have to protect the reservation for the coming generation. We went and met the Vice Chancellor of JNU. 2 rectors were also there. We requested the Vice Chancellor that please don't implement this order. So Vice Chancellor said we will have to implement this order if we don't get any other letter from the government or UGC. See, what was the issue? The issue was not at all whether there should be reservation or not. No. The issue was that the National SC ST Commission had written to the Ministry of Human Resource Development, MHRD, that we keep receiving complaints from various people in the country that central universities are not implementing reservation policy in totality in proper manner. So please look into the matter. So MHRD forwarded this letter from the commission to the UGC. Instead of looking into the matter, what UGC did was that they circulated a confidential circular, which is not open in public, to all central universities that you please do away with the reservation itself. Now we all came together in the UDSF, we decided what to do. We have to protect reservation for our future generation. Because ये तो इसी बार से एकदम खत्म कर देंगे. Murli Manohar Joshi was the HRD minister. It was Bajpayee ji was the prime minister. Luckily our Paswan ji was there. So we met Ramvilas Paswan ji at his residence. His
PA was not giving us time, but we told him that you go and tell the minister sir that we are not here demanding job, we are here to protect our rights. तो फिर पीछे साइड में उनका एक गार्डन है, वहां पे हम सभी लोग मिले. We all met him there. We explained him that this is the matter. We gave him a copy also of the letter because वो letter हमारे हाथ लग गया somehow, thankfully. In fact, one of the directors said, आपको लेटर कहाँ से मिला ये बताइए, तो कॉन्फिडेंशियल लेटर है. तो हमने कहा उसको फांसी पे चढ़ाइएगा क्या, हमको कहीं से भी मिला, आपको उससे क्या लेना देना. We made that letter public. So पासवान जी said कि क्या करना है. I said we should go and meet the HRD minister first, Murali Manohar Joshi. Paswan ji said he will not meet you. He will not give time to you. I will take time on your behalf and you will come with me. So I will fix the appointment. At least he will not deny time to me. So we went there and met Murali Manohar Joshi with Paswan ji the next day. As expected, his response was very hostile. Instead of looking, patiently into our issues and demands, he is saying, आपको समझ में नहीं आता है मुझे. तो I said, सर क्या समझ में नहीं आया, आप PhD कर रहे हैं ना, ऐसे ही बोला मैं. तो मैंने कहा तो आपको ये भी पता नहीं है कि यूजीसी ऑटोनोमस बॉडी है. मैंने कहा सर किसी ऑटोनोमस बॉडी को ये अधिकार है क्या, मैंने ऐसे ही बोला. मैंने कहा कि आज तो बोलूंगा कि वो संविधान के प्रावधानों से खेल करे. संविधान में कहीं लिखा है कि अगले सेमेस्टर से SC ST का रिजर्वेशन नहीं रहेगा. संविधान का प्रावधान है इसलिए हमको रिजर्वेशन मिलता है, और उससे खेलने का काम, उसको बदलने का काम देश की सरकार और संसद कर सकती है, कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं कर सकती. हाँ, आप मंत्री जी के साथ आए हैं तो आप ठीक ही बोल रहे हैं, कुछ देखना पड़ेगा. मीटिंग खत्म हो गई. नीचे आए हम लोग शास्त्री भवन से, तो पासवान जी पूछे कि अब क्या करना बताइए, कुछ सुझाव दीजिए. तो मैंने उनसे कहा कि सर जोशी जी नहीं करेंगे. तो पासवान जी ने भी कहा कि नहीं करेंगे. ठीक है, वो उन्हीं का तो किया हुआ खेला था, सारा खेला उन्हीं का किया हुआ था. तो हमने उनसे, पासवान जी से पूछा कि कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है क्या, क्योंकि ये महीना था, बजट जब पेश होता है उसके बाद एक महीने का रिसेस होता है. देयर इज ऑलवेज अ रिसेस, एंड देन आफ्टर April 14th पार्लियामेंट मीट्स अगेन to discuss the budget. In February, when the budget is presented, there is a 1-month recess, and then after April 14th, वही March April के टाइम के आसपास की बात थी. तो what our strategy was that outside the parliament we will do the movement, inside the parliament we were meeting our parliamentarians to raise the matter whenever parliament reopens. But in the meantime एक strategy ये भी था कि जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर के हम कैबिनेट के अंदर ये मामला उठाते हैं. सो आई आस्क्ड पासवान जी, व्हेन इज योर नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग? ही सेड 2-3 दिन में होने वाला है. आई सेड यू रेज द मैटर विद इन द कैबिनेट विद द प्राइम मिनिस्टर, दैट व्हाई विदाउट डिस्कशन इन द कैबिनेट a decision like this has been taken. Government has not taken a stand on this. Parliament did not discuss this issue. Then why UGC was allowed to take a stand like this? Why UGC passed a decision like this? So you raise the matter with the Prime Minister and other cabinet ministers. So he said, आपने सारे पेपर्स दे दिए? मैंने कहा सारे दे दिए आपको, आप उठाइए. He went there, वाजपेयी जी के पास, कि तो वाजपेयी जी से, हाँ पासवान जी क्या बात, ये क्या पेपर है पासवान जी? तो उन्होंने कहा सर आप खुद ही देख लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देख लीजिए क्या है. तो अच्छा जोशी जी मैं ये क्या देख रहा हूँ? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं. अरे क्या नहीं बोल रहा हो भाई, ये तो आपका लेटर है यूजीसी का, ये कब डिसाइड किया था हम लोगों ने? ये तो गलत बात है जोशी जी, हम लोगों ने कभी इस तरह का कोई डिसीजन लिया
क्योंकि पासवान जी ने उनको बोला था कि हमारी एनडीए की सरकार दलित आदिवासी विरोधी काम कर रही है। तो ये हम लोगों ने तो कभी इस पे कोई डिस्कशन तक नहीं किया। ये कैसे यूजीसी डिसीजन ले सकती है इस तरह से? आधे घंटे के अंदर कैंसिल होना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। एंड बिलीव मी, 1 घंटे के अंदर वो कैंसिल हो गया ऑर्डर। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर सरकार अपने अपने तरीके से एससी एसटी के इश्यूज को लेके हमेशा पॉलिटिक्स खेलते रहे। गंगा जी ने केविन रट, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने वहां के आदिवासी समाज से माफी मांगी पार्लियामेंट के अंदर पूरे देश और दुनिया के सामने, 2007-8 के समय मनमोहन सिंह ने, जब हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक डेलीगेशन आई थी दलित्स की जो अमेरिका, यूके, कनाडा में रहते हैं, उनके सामने उन्होंने ये कहा, एक भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहला स्टेटमेंट है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज वर्स देन द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड, बट माफी नहीं मांगा। तो हमने उस मामले को उठाया था यूनाइटेड नेशन में भी जाकर के, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में एकदम ठीक उल्टा काम कर रही थी, वो हमारा ही विरोध कर रही थी भारत सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, वो आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपका विरोध करते रहेंगे। आप मिलने जाएंगे तो लगेगा कि ये तो हमारे सबसे बड़े समर्थक, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वो आपके सबसे बड़े विरोधी है। ये भी एक सच्चाई का हिस्सा है और उसी के साथ हमको जीना है। सिर्फ मैं ये और भी थोड़ी बात बोलना चाह रहा था, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये जानना जरूरी है कि इंदिरा साहनी केस जो है वो कुछ दरवाजे खोलता है लेकिन बहुत सारे दरवाजे बंद भी कर देता है, और उसको एक आधार बनाया। जो फर्स्ट 140 पेज है करंट जजमेंट का, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जजमेंट है चंद्रचूड़ जी का, आप उसको पढ़िए। इंदिरा साहनी केस और भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसको एक बेस बनाया गया है ये जस्टिफाई करने के लिए कि कैसे स्टेट्स कैन रिक्लासिफाई। बाकी लोगों का जजमेंट पढ़ेंगे, गवाई जी का तो 280 पेज का जजमेंट है, ठीक है, सबसे बड़े कानून के जानकार वही हैं और बाबा साहब के भी फॉलोअर हैं, ठीक है। तो वो बाबा साहब का एग्जाम्पल देंगे और उनका स्टेटमेंट देंगे कि कैसे वो भी सपोर्ट करते हैं। आप अभी तक का जितने भी जजमेंट आए हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, खास करके रिजर्वेशन का मामला हो या SC ST एट्रोसिटी का मामला हो, आप किसी भी जजमेंट को उठा के पढ़ दो, उसको दे शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन ओनली, बिलीव मी। बट वो इतने लर्नेड जजेस हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, अदरवाइज मेरे ऊपर ही कंटेम्प्ट लग जाएगी, ठीक है। आई हैव फुल रेस्पेक्ट फॉर देम, बट इट डजंट मीन दैट दे आर आवर गॉड्स। बहुत ही गंदे जजमेंट है, कोई भी जजमेंट आप उठा के पढ़ लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि वेदर आर्टिकल 341 के बारे में बता रहे थे, स्पेसिफिकली रिटन है ओनली पार्लियामेंट हैज अ राइट टू मेक चेंजेस इन द लिस्ट, ओनली पार्लियामेंट, नॉट इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओनली पार्लियामेंट। वंस द लिस्ट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, only Parliament of India can make the changes. Then on what basis our learned Supreme Court Chief Justice and other fellow judges are saying that no states can do it? On what basis? पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, they are saying subclassification and creamy layer, these are two different things. They may look different on the face of it, but actually in actual practice both are akin, दोनों बराबर हैं। See, if you say that no, there is a need to reclassify, that means, like say for example the Punjab government case, in which they said 50% reservation will be for the Mazhabi Sikh and Valmiki community, and rest
population of Dalits will get 50%, rest 50%. तो ये जो रेस्ट 50% है वो तो पहला 50% के लिए एलिजिबल नहीं है ना, आपने उसको अलग तो कर दिया ना. Then on what basis you are saying no? When we are reclassifying, we are not excluding anyone. But in actual practice, you are excluding. तो ये तो शब्दों के साथ खेलना है. You are just playing with the words. कि नहीं हम उनका विभाजन इस रूप में कर रहे हैं कि उनको अलग नहीं करेंगे. अब जैसे मान लो गवई जी ने कहा कि नहीं अलग भी करना चाहिए. And he said very demeaning words for people like me or you, because all of us are similar in many ways, in more than one ways. Those who are opposing the creamy layer concept, their mentality is like the general compartment mentality. General compartment mentality जानते हैं आप लोग कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है ट्रेन में वो जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता है. एक बार घुस जाता है तो दूसरे को घुसने नहीं देता है. I mean, a judgment should carry these kind of demeaning words. कि आप अगर विरोध कर रहे हैं तो आप जनरल कंपार्टमेंट मेंटालिटी वाले हैं कि दूसरे को नहीं घुसने देंगे, देखते हैं कैसे घुस जाएगा. हम लोगों ने तो ऐसा मेंटालिटी की बात ही नहीं की. हमने यही कहा है there can be better ways of tackling the problem. प्रॉब्लम है बहुत लेवल पे, मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है, मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है. हम और आप सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम सिर्फ हमारे लिए नहीं है, प्रॉब्लम बाकी लोगों के लिए भी, लेकिन उनका नेचर अलग है, उसका डिग्री अलग है. हमारे लिए तो नेचर ही सिर्फ अलग नहीं है, उसका डिग्री भी बहुत हाई है. मैं अपनी कहानी बताता हूं कि even after getting my education from the best education institution of this country, I have faced discrimination at every possible level. I did my BA Honours in Political Science from Hindu College of Delhi University, 1988 to 91. I came all the way from Patna, all alone. Spent the first night at railway station because I had no place to go. But I was determined I will get admission. I took admission. I did not get hostel for 6 months. That was a clear-cut case of caste-based discrimination. Because I got admission in the first list itself. And 6 महीना मेरे को दौड़ाते रहे हॉस्टल के लिए. I had to rent a room in Timarpur and stay there. But I was determined I will not go back to Patna. The day on which the winter semester vacation was to start, I got the hostel. That was in December 1988. I moved to the hostel and then went home. Came back, studied there till my graduation. 91, I got into JNU in Center for Political Studies. I completed my MA. Now, you have to sit for MPhil PhD admission test. So I applied in 3 centers: Political Science, Sociology and Education. Education तो ऐसे भर दिया था. Political Science and Sociology were my favorite subject. See, when the result of the entrance exam came, my name was there in the category list of Sociology, but not in Political Science. Then you will say, how is it a case of discrimination? I'll explain you. I said, no, I can't believe this. In class 12, I studied political science as an optional extra subject at Kendriya Vidyalaya, Kankadbagh, Patna, because there was no teacher and my principal said, how will you study? I said, I will study. I'm good enough. So I finished D.D. Basuka Constitution in class 12th itself. Okay, and NCERT books. I said, no, it's cannot happen that in political science
which I have studied, in class 12, 3 years BA Honours Political Science and then 2 years MA in JNU. It's just not possible that I will not get through. No. I started checking my name from the top. I was there in the general category. I felt very happy that at least JNU is giving me justice. I gave the Viva Voce interview. And when the final result came, surprisingly, sociology had my name, political science now upar tha na niche tha. I said, no, this also will not be possible. I will fight for it. And believe me, I got the admission without my name appearing in the final list. I will tell you how. For 1 week, I was kept running from one room to the other in the administrative building and my school and center. 1 week. कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले. नहीं जी, अब तो आपका हो ही नहीं सकता, अदरवाइज आपका लिस्ट में नाम आ जाता, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं है, हम कहाँ से फिर से डालेंगे आपका नाम. So finally I went to the rector, who was incidentally from my center only, and told him, and also told him that if you don't give me justice, I will go to National SC Commission. SC/ST Commission, I will go. He said, you wait. Don't get tensed. You wait, I'm getting your file. So he called up the Deputy Registrar Admission Branch. He said, Umakant ka file lekar aao. And he said, Umakant, you go and sit outside for 10 minutes. I will call you after 10 minutes. So the Deputy Registrar came with my file. They discussed for 5 minutes my case. After that, Deputy Registrar went back. I was called inside. And I was told by the rector, Professor Kuldeep Mathur, who was the rector that time, go and take admission. How is this possible? Is this not a case of discrimination? If I had not fought back, I wouldn't have got admission. And this was happening in JNU when? In 1993. This is 2024. And don't tell me that JNU doesn't practice discrimination. It practices discrimination at every possible level. Every possible level. We don't know many cases. We don't know many cases. I mean, Professor Rana is here. He's our contemporary. He's our senior. He's like our elder brother. We have fought together for several things. The faculty of JNU were responsible for creating a student organization called Forward Association of India. Why? To counter Bahujan Student Front, of which Professor Rana was the presidential candidate. In 1995-94, he was presidential candidate, 95 again. In 1995, along with him, I was the general secretary candidate. We had to give open challenge. And there were some faculty members responsible for Forward Association of India to oppose Bahujan Student Front and Rashtriya Chhatra Janata Dal, because that also had come up. Our own people were responsible for that. So CJD was there and Bahujan Student Front. In fact, 1995 CJD and BSF fought together. So there have been attempts by the administration, whether in JNU or outside, for which we have to fight. The point that I'm trying to highlight here is that at nowhere you will find a very favorable, a welcoming attitude as far as our questions are concerned, whether it is a question of taking admission or a question of getting a job. I'm still fighting, I have no job. Because, one faculty commented, I'm an activist. Everyone knows it. And why should I hide? From grassroots to the United Nations level, I have done the activism.
I used to work with National Campaign on Dalit Human Rights for more than 10 years. I used to handle international advocacy also, through which I used to go to United Nations, European Union, European Parliament, everywhere. To the World Social Forum, everywhere I used to go. I used to attend, I used to work on Dalit human rights. My PhD is on human rights. So as I was telling you, then when I got admission in MPhil, without my name appearing in the list, did the coursework, now you have to submit your MPhil dissertation, so you have to present your synopsis. So I prepared a synopsis. Politics of Ethnicity, a case study of Jharkhand. Went to a teacher who was not teaching because of some case at that point of time, and he had filed a case in the High Court. He forewarned me, Umakant, don't go there with this proposal, because anything on ethnicity will not be accepted in your center. I said, why? What's wrong in that? Times have changed. I'm from a new generation, I'll defend my topic. He said, okay, go ahead. He had forewarned me, and one senior professor said, no, we cannot accept this proposal. I said, why? He said, no, they will not say that we will not allow you to work on ethnicity. No, they will not say this. So they will say, as I was told, oh, a lot of work has already been done on this topic. I said, yes, that is true. But that is true for history, anthropology, sociology, not for political science. I have not seen many work on political science on Jharkhand. He said, yeah, that is also true, but that doesn't mean that you should be working on it. Ab kya karenge? I was sitting silent. So one teacher asked me, another teacher, have you thought of any other topic? I said, no. Then another teacher said, okay, if you're that keen on Jharkhand, why don't you work on partisan politics in Jharkhand? Yeah, next Wednesday you come with another synopsis. Because every Wednesday, they used to have this synopsis presentation thing. So next Wednesday, I had to go with another synopsis. So this was also a discrimination that I faced. Finally, हमने जमा कर दिया. जमा करने के बाद 1.5 साल से ज़्यादा लग गए हमें डिग्री मिलने के लिए, और वो भी सुनो, डिग्री विदाउट वाइवा. I am an extraordinary person. First, when the external examiner came to take my interview, center did not inform me. It was a student union election time. I would never come to center. There was only a notice put up at the notice board that Umakant, please meet the undersigned. उसमें ये भी नहीं लिखा था कि एमफिल का वाइवा होना है आपके डिसर्टेशन के इतने तारीख को, कुछ भी नहीं लिखा. One person came and said, अरे तुम्हारे नाम का एक नोटिस लगा हुआ सेंटर में. मैं दौड़ा आया, भाई हम तो आते नहीं थे इसलिए सेंटर में, कि जमा तो कर ही दिया था 1 साल पहले, और चुनाव का टाइम चल रहा था तो उतना जाते नहीं थे. तो अरे आप कहाँ थे, आपका इंटरव्यू रखा था. हमने कहा हमें बताना तो चाहिए, वो भी नहीं बताया. तो हमने कहा ठीक है, अब आगे रख लो, या 2-3 मिनट आगे रख लो. तो इसे ठीक है देखते हैं. उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो वो आ ही नहीं सकते. करते करते 1.5 साल से ज्यादा हो गया. ठीक है, मेरा डिग्री अवार्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि वाइवा नहीं होगा तो डिग्री अवार्ड नहीं होगी. तो फिर मुझे एक टीचर ने, सोशल साइंस का ही एक टीचर ने बताया कि देयर इज ए प्रोविजन इन द यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स दैट इफ देयर इज एन अनड्यू डिले इन होल्डिंग द वाइवा, डिग्री कैन बी अवार्डेड विदाउट वाइवा. ठीक है. सो आई टोल्ड माय सुपरवाइजर कि ये यूनिवर्सिटी में प्रोविजन है. शी सेड आई एम नॉट अवेयर ऑफ सच रूल्स. आई सेड कि मैम, if it is applicable in one center, it can also be applicable in another center. So you please take up the matter in the faculty meeting at least. So next faculty meeting, they took up the matter, and then it was referred to the dean office, and then it went to CASR, and then
Professor Ashok Mathur was the dean that time. He said, डिग्री अवार्ड नहीं किया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया, इसको डिग्री अवार्ड कर. So I was awarded MPhil degree without my viva. Now PhD के synopsis के time पे I wanted to work on Dalit human rights. Why Dalit human rights? Why not Dalit civil rights? Why not atrocities on Dalit people? So that time I was very clear that I will not bow down to their pressure. I will not change my synopsis. I will work on this topic only. Let them ask me questions. I will prove them that why there is a necessity to do this kind of research work on human right of Dalits in Bihar. Why? So they finally agree. The point that I was making here is that even if, say, 40% people from my caste have improved their lifestyle, rest 60% are still in a backward state. The process of development in this country is so uneven that just 3-4 days ago, a new study has come, which is done by professor from Indian Institute of Management, Bangalore, and some 2-3 other people, which says that SC/ST people, when they are engaged in business activities, the possibility of getting income from business activity for SC/ST is 15 to 18% less than others. So if you have money, then only you can get into the business sector, right? You are much more privileged than others. So doesn't mean, as I was telling earlier also, that if Ramnath Kovind became president of India, doesn't mean that his family members will not face, or even Ramnath Kovind will not face discrimination in society, or whether Draupadi Murmu's family or Draupadi Murmu will not face problem in society. Because Kovind ji was not allowed to enter the Puri temple. Have you seen that video? जिसमें वो ब्राह्मण प्रीस्ट जो है ना, उनका पाँव पकड़ रहा है, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा. उसी तरह से बाकी लोगों के साथ भी होता है. पहले का भी केस बता चुके हैं. हमें अपने संघर्ष जारी रखनी पड़ेगी. क्लासिफिकेशन और नो क्लासिफिकेशन का मुद्दा ही नहीं है. ये सिर्फ मुद्दा भटकाने वाला मुद्दा है. असली मुद्दे पे आइए. सबको मैं आज वही सवाल उठा रहा हूं कि जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग नहीं है, उसको आप नौकरी दे देंगे? कैसे दीजिएगा? कहां से देंगे आप नौकरी? हर चीज के लिए आपने एक कट ऑफ बना के रखी है. वो कट ऑफ में आप नहीं आएंगे, आपको ना एडमिशन मिलता है, ना आपको नौकरी मिलती है. भाई आप 30%, 25% वाले को आप एडमिशन देंगे? हो ही नहीं सकता. कहेंगे नहीं, ये हमारे कट ऑफ में आता ही नहीं, कहां से देंगे? बात है EWS का जो रिजर्वेशन है कि भाई इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है. सरकार इतनी चालाक है कि 2019 में उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया. और वो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. अब उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज तो कर नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस आधार पे तो खारिज कर सकती थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने खारिज. उसको सही साबित घोषित कर दिया. लेकिन जब बिहार गवर्नमेंट ने अभी सेंसस कराने के बाद 65% रिजर्वेशन देने की घोषणा की, तो पटना हाईकोर्ट जजमेंट ने उसको खारिज कर दिया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता. तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन फिर आपने EWS कैसे दिया? 10% कैसे दे दिया? तो ये बदमाशी चलते रहे. अब ये तय करना है हमको कि हम अपने अधिकार को सुरक्षित कैसे करें, विदाउट फाइटिंग अमंग आवरसेल्फ, विदाउट क्रिएटिंग डिविजन्स विद इन आवर ओन सेल्फ. अब ये हमको तय करना पड़ेगा. ये सारे लोगों को, हमारे समाज जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, उसको बैठना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि 21 तारीख को कोई मैसेज देना है तो ढंग से मैसेज दीजिए, और नहीं तो गाते बजाते रहिए. थैंक यू वेरी मच.